से कह रहे हो कि धुएं की वजह से बच्चे पैनिक हो गए. Person has to be taken to the hospital. At times, the symptoms aggravate due to smoke, like becomes dyspnea, short of breath. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त समित भार्गव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडी बोलता है लव लिव लव। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं बिल्डिंग फायर एंड अलाइड सेफ्टी सेमिनार में, जिसको ऑर्गेनाइज किया है रिस्क कंट्रोल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन ने। यहाँ आज हम जानेंगे कि आग किन कारणों से लगती है और उससे बचाव कैसे किया जाए। दोस्तों, आग लगने का कारण हमेशा बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे कारणों से भी आग लग सकती है, जैसे कि लूज वायरिंग, वरना आग लग सकती है। कोई भी एक इलेक्ट्रिक पॉइंट से ज़्यादा लोड नहीं चलाना चाहिए, वरना आग लग सकती है। अपने घर में या ऑफिस में लगे स्प्लिट एसी की सर्विस हर कुछ महीनों में कराते रहें, वरना आग लग सकती है। सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर लगवाने से आप आग से नहीं बच सकते, उसे चलाना भी आना चाहिए। इसलिए आज इस सेमिनार में हम जानेंगे 3E के बारे में। फायर सेफ रहने के लिए एक इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट चाहिए, यानी कि सामूहिक जानकारी, और इंग्लिश में उसको कहते हैं 3E। पहला E का मतलब होता है इंजीनियरिंग, यानी कि सही तरीके से एक्सटिंग्विशर को यूज करना और सही जगह यूज करना। दूसरे E का मतलब होता है एजुकेशन ऑफ यूजिंग फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स। तीसरे और आखिरी E का मतलब होता है एनफोर्समेंट, जो देता है लिखित में जानकारी कि आपको फायर के समय कहां से एग्जिट करना है। आइए अब इस सेमिनार का हिस्सा बनते हैं और अपने गेस्ट से कुछ सवाल पूछते हैं और उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। आइए अब हम पहले मिलते हैं बसंत कुमार नाइक जी से, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। Sir, you have been corporate head in Singapore in your job assignment. While working, how do you find the level of consciousness among the fire safety amongst common man? Are properly used at the time of need. जब emergency आएगा तो यूज करने लायक होना चाहिए। उसके लिए ट्रेंड पर्सनल, ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड से लेकर ट्रेंड एम्प्लॉय, सबको कुछ ना कुछ एजुकेशन कंटिन्यूअसली दिया जाता रहता है। एक क्राइसिस आएगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे। All building, what has been your impression about exit door, fire extinguisher, practice of fire drill? Exit road, balcony should not be put up with grills, solid grills. अच्छा, कोई भी बालकनी हो। But sir, it's dangerous. अगर घर में कोई बच्चा है तो अगर हाई अपना पारापेट को थोड़ा बढ़ा दीजिए, ऊंचा कर दीजिए, 4 फीट 5 फीट तक भी बढ़ा सकते हैं। फायर डिपार्टमेंट पीपल दोज हु कम टू रेस्क्यू, उनको घुसने के लिए क्विक टाइम चाहिए। वो ग्रिल कटिंग करके घुसते घुसते लाइफ सेव नहीं हो पाएगी, तो बच्चा नहीं गिरेगा अगर थोड़ा हाइट बढ़ा देंगे तो। ठीक है, 4 फुट कर दीजिए, स्टैंडर्ड इज 4 फीट हाई राइज में, और 6 इंच बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यू शुड हैव ओपनिंग, should not have fixed grills, or you should have a sliding sort of thing, ताकि जरूरत पड़ने से खोला जा सकता है। बिल्कुल। 2 staircases और each फ्लोर में फायर प्रूफ डोर होना चाहिए, और डोर बंद रहने चाहिए हमेशा। अच्छा। स्टेयरकेस का मतलब नहीं कि लिफ्ट लॉबी से आप या स्टेयरकेस लॉबी से पूरा खुला रहना चाहिए। स्टेयरकेस बीच में फायर प्रूफ डोर होना चाहिए स्टील का, तो जब जाएंगे पुश करके निकलिए। अगेन दैट शुड ऑटोमेटिकली क्लोज डाउन। अच्छा, नहीं तो स्मोक आ जाएगा अंदर। मान लीजिए एक स्टेयरकेस में फायर लग गया, तो फायर हो गया, तो स्मोक जो जनरेट होगा वो आपका लिफ्ट लॉबी में आ गया। अब जैसे ही दरवाजा खोलोगे घर में आ जाएगा स्मोक। तो स्मोक इज नॉट आइसोलेटेड और फायर इज नॉट आइसोलेटेड, इसीलिए डोर हमेशा बंद रहना चाहिए। एनी सजेशन टू इम्प्रूव फायर सेफ्टी? फायर सेफ्टी कम्स आउट ऑफ कॉन्शियसनेस। आप ऑलवेज अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं कोई लूज वायर कहीं तो है नहीं, कहीं स्पार्क कर रहा है फिर भी हमारा फैन चल रही है। एसी का सर्विसिंग रेगुलरली जरूरी है। क्वार्टरली वंस यू शुड गेट इट सर्विस्ड। एसी से भी काफी, स्प्लिट एसी से भी जनरेट होती है फायर।
हर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सर्विस एएमसी में हो या बीच बीच में सर्विसिंग करके फुल्ली फंक्शनल रखना चाहिए, रिस्क फ्री फंक्शन। अलर्ट रहना चाहिए हर क्षेत्र में, इवन इन किचन ऑल्सो यू शुड रिमेन अलर्ट। हाउ योर गैस कनेक्शन पाइप, दैट कनेक्टिंग पाइप periodically should be changed. गैस शुड नॉट बी लेफ्ट ओपन, दोनों नब बंद का होना चाहिए और फुल प्रोटेक्शन। एक नब खुला और एक नब ऐसा ना हो। बर्नर खोल के आप चले गए और स्विच ऑफ हो गया, गैस पूरा हो गया। डोंट स्विच ऑन। दीज आर दी प्रैक्टिसेस, बिहेवियरल प्रैक्टिसेस, everybody should know and use it. Mr. T. Babu Paul, General Manager, National Insurance Company Limited. आइए अब उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। Sir, what is your impression on awareness of common man about fire safety in India? Very less. Common man, they know about fire. They know the damages that fire can create, but in case of a fire, when he is actually confronted with a fire situation, they don't know what to do. We know that more than 2/3 of the deaths in fire or the injuries in fire happens due to inhalation of the smoke and soot. Only 1/3 happens, one third of the fatalities happen due to actual burning. So people, they look at protecting themselves from the fire burn rather than protecting themselves from the smoke and soot. So first thing what we tell is that in case of smoke, crawl so that the smoke doesn't come down. Crawl, maybe take a kerchief or wet it, put it on the face. So these things, but then we don't have that kind of a culture in India where the fire safety, not only with the common man, even at the big corporates, the fire safety drills, the mock drills are not being done on a regular fashion. So even people who are जो like पढ़े लिखे लोग, उनको भी इतना जानकारी नहीं है कि ये फायर का इंसिडेंट अगर हो गया तो क्या करना है. So that is a major issue which both the government as well as bodies like College of Insurance and employers have to sensitize and train their employees. The fire brigade in most of the state do not have a fire tender to deal with tall buildings above 15 meter. Under the circumstances, when we find in Kolkata more than 300 buildings of 15 meter height, what advice do you give to people for fire protection? Actually, in high-rise buildings, people should always be mindful of how to evacuate themselves in case of a fire, and in case of a small fire, fight it themselves. So have the basic hand appliances to fight fires, small fires. Not a very elaborate setup, but minimum setup, maybe a small can, whether you can fight fire. Also, there are some like escape routes or the balconies which are created in high-rise buildings where these people can come and temporarily escape from the fire, temporarily take shelter. But unfortunately, sometimes the doors to those are locked. The residents do not know where it is, and the problem is compounded when you have elderly people who are mobility challenged in their houses. So sensitization is more important. The fire department can do, but they have their own limitations. One is of equipment, infrastructure. So one is that when these permission for these buildings are given, and the government should insist that the builder should take adequate protection or adequate mitigation factors so that in case of a fire, at least there is no loss to human life. Another issue, what happens at higher floors, 15 meters or high, the wind is very fast there. So even if a small fire, you open your window, the fire can spread, fire can blow. Yes. So it's a risk. The best is government should enforce, like we have seen this engineering
enforcement, and education. These three things have to be commonly done. So engineering is the infrastructure creation for firefighting, and then the education and enforcement. Education is how you convey these facilities to the residents, to the servants, to the security, to the visitors. And third is enforcement. Government should enforce that high-rise building at least once in 6 months. There should be a fire safety drill, mock drill. Yeah. So these are some of those methods by which we can avoid loss of life. Lead insurance company. Did you insure any tall building in which large number of people died? See, we have insured a lot of tall buildings. Fortunately, we didn't have that kind of a scenario where in tall buildings the people were trapped and they lost their lives. We have one case of one hospital in Kolkata where there was a fire and patients they had mobility issues, they couldn't be evacuated, and there was a large number of loss of lives. So we come across this on a day-to-day basis. Good thing is that industrial premises, their safety awareness and safety enforcements are much better. But in the official or the office complexes, mixed complex shopping malls, these are a little difficult areas. One is because of the number of people coming in. Second is because of they don't follow any particular set pattern. In a manufacturing company, the employees are same. The employees have strong, there is one management which can drive the safety initiatives, but not in a public place. Public place, it becomes very difficult. Sir, as we know, incidence of fire is increasing. This must be affecting fire insurance portfolio. So, are insurance company thinking to set up anything like loss prevention association? Actually, we had a organization called Loss Prevention Association, which was formed by an act of government, and the insurance industry was supporting that. But after the liberalization of insurance sector, that institution was the government, or it was not continued, which is unfortunate, which I would say. It is always better that the insurers come together, collaborate with the industry, and bring in these kind of institutions where we can utilize the expertise of already senior people who have worked in insurance industry or worked in the other industry, manufacturing industry, and experts on public health and safety. This will not only prevent loss of lives and property, but also add to the nation building, because any damage to property, it is not just the cost of property, it is cost of the business loss. So any damage there affects the nation. So in my opinion, prevention, education should be prioritized either by government or by statutory bodies or by the industry bodies, so that the national wealth can be protected and we can use every resource, effort in nation building. आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी गेस्ट डॉक्टर मृदुला प्रकाश्ता मैम से, जो कि गायकोलॉजिस्ट हैं और IMA दमदम की वाइस प्रेसिडेंट हैं. मैम, कैन यू टेल अस द मेडिकल रीजन व्हाई इन स्मोक पीपल लूज नॉर्मल बिहेवियर एंड इवन डाई? During any fire, there is heat, flames, and smoke. Smoke has many contaminants, small particles, large particles, then some toxic gases like carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen cyanide, nitrous oxide. So anybody is exposed to smoke even for a very short while, but there is immediate effect. Smoke irritates eyes, throat, nose, and it leads to some nauseating effect as well. And whenever there is smoke, there is lack of oxygen, asphyxia. It's very difficult to breathe also. So, a person who is exposed feels a lot of cough,
irritation in the eyes, the irritation in the nose, and at times there is difficulty in breathing and giddiness, pain in chest. And another thing which happens when exposed to smoke, there is this disorientation. Cognition and judgment is also disturbed. This is mental effect on the brain because there is lack of oxygen. And another thing, there is a center in the brain which detects if there is any danger to the body. Oh. That is amygdala and limbic system. So in case of fire and smoke, electrical activity in that part of brain becomes very active, fast. The net result is person has the intense fear in mind, this feeling of intense fear, and becomes panic. And that is the reason, due to this panic, fear, lack of judgment, disorientation, many people try to jump to save from the fire. They never think what's going to happen. That is the reason smoke has got effect on the brain. दोस्तों ये व्लॉग करने का सबसे पहला कारण यही है कि मैं आप लोग को सतर्क कर सकूं फायर सेफ्टी को लेकर। जो जानकारी आज मुझे यहाँ से मिल रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। नेशनल बिल्डिंग कोड फायर प्रोटेक्शन मैनुअल में ये सभी कुछ लिखा हुआ है। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमारी गवर्नमेंट के नेशनल सेफ्टी काउंसिल से संपर्क करें या फिर प्राइवेट कंपनी रिस्क कंट्रोल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन को संपर्क करें। अब प्रोग्राम हम लोगों का ख़त्म हो गया। जो भी प्रश्न आपको रहेगा, हमारा ईमेल आपके पास है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस and we will be happy to answer you and I will be always there for you. नमस्कार। मेरा ये व्लॉग मेरे बाकी व्लॉग से बहुत ही अलग है क्योंकि ये मैं डेडिकेट करता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने आग से अपनी जान गंवाई। हम नहीं चाहते कि लोग आग से धुएं से अपनी जान गंवाएं। हम चाहते हैं आग हमारे काम है, इसलिए जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ऑल द बेस्ट। तो ऐसी ही जानकारी लेकर आता रहूंगा। आप देखते रहिए एबी बोलता है। लव लिव लाफ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। हाँ, वीडियो के चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।